Okay, are we live? I don't know. I have no idea. Okay, am I live? Oh, yes, I am live. Okay, so I'm doing this for the first time. It's fucking 4 a.m. in the morning here in Australia. So, okay. Okay, let's do this. So, welcome to my shoot trades, and the reason I'm streaming right now is because Bitcoin is breaking out. So this is the big Bitcoin daily chart और आप देख सकते हैं you know we've been in this consolidation for almost 30 weeks and now we're finally it seems like that we're finally breaking out. तो मैंने सोचा इस पे अपनी जो है वो जो पर्सपेक्टिव है मेरा फ्रॉम द एलिट वेव पर्सपेक्टिव इस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट राइट नाउ सो without any further ado let's get into the counts. So as you know I've been following this count, the leading diagonal count, as my favorite count for the moment. और इसमें मसला ये है 8 आवर चार्ट पे आ जाते हैं एज यू कैन सी के ये रेजिस्टेंस से मुझे लग रहा था ये जो रेजिस्टेंस है लीडिंग डायगोनल की ये प्राइस ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से रिजेक्ट होके वील गो इनटू वेव 2 एंड देन वील स्टार्ट पंपिंग अगेन एंड देन ब्रेक आउट ऑफ द बिगर चैनल. लेकिन इट सीम्स लाइक कि ये चैनल रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो रही है और जितनी प्राइस जो है वो इससे ऊपर जाती जाएगी, इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाती जाएगी जितनी प्राइस, उतनी इस काउंट के जो लीडिंग डायगोनल काउंट है हमारी, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो उतनी कम होती जाएगी. सो लेट्स थोड़ा सा रिकैप कर ले हम पहले डेली चार्ट पे. सो हमारा अभी तक का जो सफर है वो ये है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ, तो वी स्टार्टेड ऑफ विद द थ्री वेव मूव. This was a three wave correction and then again we had a connecting leg, a three wave move right here, and then अब question में ये है क्या this is the final move या फिर we'll have another three wave move. This is the question. So we have one three wave move. Let's अभी सिर्फ चीज़ों को सिंपल रखने के लिए let's just name it ABC. हम ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाएंगे. इफ इट्स ABC WXY सही है. तो हमारे पास ये पहला थ्री वे मूव है ABC एंड देन वी हैव अनदर थ्री वे मूव ABC. इट कुड बी हियर और हियर, डजंट मैटर फॉर द टाइम बीइंग. सो वी हैव अनदर थ्री वेव मूव. तो हमें पता है जो भी थ्री वे मूव होता है उसके बाद फिर एक और थ्री वेव मूव होता है, पार्टनर लेग होती है. पार्टनर लेग से मुराद ये है कि ये हमारी जो फर्स्ट लेग थी करेक्शन की फ्रॉम हेयर टू हेयर, इसकी एक पार्टनर लेग होनी चाहिए फ्रॉम हेयर टू हेयर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पहली लेग थी और फिर उसके बाद ये थ्री वेव स्ट्रक्चर जो है, दिस इज अ कनेक्टिंग लेग बिटवीन द फर्स्ट करेक्टिव लेग एंड द सेकंड करेक्टिव लेग. तो अब सवाल ये है कि सेकंड करेक्टिव लेग इज इट ओवर फ्रॉम हियर टू हियर या फिर ये अभी भी जारी है. इट्स स्टिल इन द प्रोसेस, वी आर स्टिल इन द करेक्टिंग प्रोसेस. तो उसके लिए हमारे पास दो तीन काउंट हैं. सबसे पहले बेरिश काउंट से स्टार्ट करते हैं. जो सबसे बेरिश काउंट है इस वक्त मेरे पास वो ये है कि this right here is the first leg and right now we are just moving correctively up and then we're gonna have a partner leg down again to complete the entire correction. So basically
this is the first leg. So technically, let's go into 8-hour chart. So technically, let me put on the channel. So this is the channel that we're dealing with. So the idea is that we have a three-wave correction right here, upward move, three-wave upward move right over here, ABC, and then we have this connecting leg. This is well, no, not a correcting leg, but a correction before the connecting or partner leg. And now we have a three-wave partner leg right, correction right here. इसको भी लेबल कर देते हैं ABC, A, B, and C. And now we are in another A, B, and C. So this is the partner leg to this, जो कि हमारी correction complete करेगी. So sorry, excuse me, I'm actually going through a bit cold, so don't mind. अच्छा जी, हम कहाँ थे? ये दो हमारी करेक्टिव लेग हैं. तो अगर इसका हम एक्सटेंशन से मेजर करें, दिस वाज द फर्स्ट लेग, दिस वाज द करेक्शन. सो द सेकंड लेग शुड बी 1 to 1. हम ऑलरेडी हिट कर चुके हैं, एज यू कैन सी राइट हियर, बट इट कुड बी टिल 1.236, एज यू कैन सी कि ये पहली क्या नाम है, हमारी जो वेव ए है, ये पहली वेव ए से ज़्यादा बड़ी है. तो हो सकता है कि जो हमारी सेकंड लेग है, ये फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन से ज़्यादा लंबी हो. सो इट कुड एंड ओवर हियर. और फिर इसके बाद क्या होगा, अगर हम ये इसका इंटरनल हम मेजरमेंट लें इस वेव का. सो वेव ए की मेजरमेंट लेंगे वेव बी के साथ, एंड वील गेट द टारगेट्स. और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, सो इट्स प्रोमिनेंट. अरे भाई क्या हो रहा है ये? Let's make it purple. Okay, so you can see that this is the target box from here to here. This is the 0.618 to 1 to 1 जो internal count है इसका, and it also lies perfectly between the 1 to 1 and 1.236 of the larger wave correction. So the idea is that this was the first leg of correction down, and then we had a huge three wave correction. Let's call it WXY. यहाँ से W, X, and now this is Y. Let's make it primary. सही है. So this is the bigger correction. Let's make it thicker so it's visible. Okay, and after that we're gonna have a partner leg of this first drop right here, and we'll come back down, completing the total correction. We had a three wave move. क्या हो गया? We had a three wave move, then we again had a three wave move, and now finally we're gonna have the final three wave move. तो ये हमारी पूरी करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसको हम एलिट वेव की जबान में डबल थ्री करेक्शन कहते हैं. When which 2-3 wave moves are connected by a 3 wave move in the middle. WXY भी कहते हैं उसको, double three correction भी कहते हैं. So this is the bearish count. This is the most bearish count, which says कि अभी हम और ऊपर जाएंगे, and then we'll come back down, all the way down to test these lows back here. Or it would also be interesting because अगर हम support and resistances अपनी देखें, where are the support and resistance? There you go. So you can see कि ये जो support है हमारी around, अगर इसका मैं middle देखूं, it's around $52,000 to $53,000. We have already breached it once right over here,
we came down and we, grabbed the liquidity from below and then went up. And now again, we've been moving, which looks like so far we are moving correctively in three waves only. So it makes sense that we come back and, trigger all the stops over here and trap all the bulls, stop out all the bulls and grab liquidity over here below the support and then range over here and then go back. It would make sense, you know, coming back down and, breaching the support one last time and, everybody going crazy and then we go back. So this is the bearish count. This could happen. I'm not saying it will happen. This is actually the most bearish count, so I've shown you this first. Now getting back to the bullish counts, just give me a second to clear chart. Okay, so here we go. Remove this channel as well. Okay, so this is the second bullish, this is the second count and the first bullish count that you guys already know if you're in my Discord. मैं बड़े टाइम से ये count follow कर रहा हूँ, leading diagonal count, because ये अगर ये bottom है, अब bullish count और bearish count में ऐसे फर्क ये है. bullish count अज्यूम के ये जो हमारा ब्रेक ऑफ सपोर्ट हुआ था और ये हमने लिक्विडिटी ग्रैब करके क्विकली हम विक करके लंबी विक्स बनाकर हम वापस आ गए थे ऊपर. सो दिस लिक्विडिटी ग्रैब वाज एक्चुअली द एंड ऑफ द करेक्शन और अब हम वापस बुल मार्केट में आ गए हैं. सो सिंस इट लुक्स मोर लाइक अ थ्री वेव मूव फ्रॉम दिस बॉटम, तभी मुझे लग रहा था कि लीडिंग डायगोनल इज अ मोर प्लॉजिबल आइडिया. सो वी हैड अ थ्री वेव मूव इनटू वन एंड देन अ थ्री वेव मूव इनटू टू and then another three wave move into three and then a three wave move into four and then a three wave move into five, which will make our minute degree wave one, and then we'll come back down in three waves as a zigzag, because zigzags are sharp and quick and deep. So wave two, तभी wave 2 basically tends to be more zigzag rather than flat corrections. तो wave 2 के लिए हम वापस आते and then we'll head back up and make new all time highs. But अभी क्या हो रहा है, we are actually breaking out from this resistance and it seems like, and उससे भी ज़्यादा ये जो move है, it looks more like a five wave move than a three wave move. This is the first time since this bottom कि हमें ये जितने moves हैं ये सारे, भले ये move हो, इसका internal waves हो, ये move हो, ये move हो, they all look like three waves. But this is the first move, ये वाला, which looks more like a five wave move, like an impulse move rather than a three wave move. तभी जो alternate bullish count है मेरा 1212, वो भी आपको पता होगा if you're in my Discord. So the alternate is right over here, which is a 1212. कि हमारा ये bottom हुआ, we went into minor wave 1 and then this was a flat correction, expanded flat, जिसमें B wave A के ऊपर जाती है और C wave A के नीचे आती है. So we had wave 1, then a three wave correction for wave 2, and then we had minute wave 1, then three wave correction into minute wave 2, and now we have a five wave move into minuet wave 1, and we'll come back down one last time for minuet wave 2, and then it's only all time highs, clear skies ahead, price discovery mode, new all time highs, 80k, 90k, 100k, 100k plus. Who knows what will happen once we start making new all-time highs. So this is the count which is now looking more plausible since we are breaking out. The daily candle is breaking out from the channel, and just look at the structure for a second. If you look at it, 4 hour chart में चलते हैं थोड़ा deep, और
Just look at this. Oh, I'm so sorry. If you see, अगर मैं इस पे थ्री वेव मूव ड्रॉ करूं, जो कि मैंने पहले अज्यूम किया था लीडिंग डायगोनल जब मैंने काउंट शेयर किया था ए बी एंड सी. सो लुक एट दिस. और अगर इस पे मैं इम्पल्स ड्रॉ करूं, which would be 1 2 3 4 and now 5. And look at this. And just tell me honestly, which looks more plausible, which looks more convincing? Does this correction looks pretty? ये देख रहे हो आप कितना अनइवन है. छोटी सी ए वेव है, बी वेव डीप नहीं है बिल्कुल भी, इट्स लेस देन 50%. और फिर इतनी लंबी एक्सटेंडेड सी वेव. इट्स नॉट इलीगल, इट्स legal, it's valid, but just look at the aesthetics and then look at this impulse. Beautiful, beautiful impulse. और उसके साथ साथ if you see कि हमारे पास जो है RSI भी इसको सपोर्ट. Let me put the impulse back right here. Just give me a second. 1 2 3 4 and we are still in 5. I don't know, 5 might be over, but we're still in wave 5. If you look at the RSI, you see the RSI has also peaked at wave 3, and which means के ये इस wave 5 के साथ साथ हमें अपनी 3 और 5 के बीच में बेयर डाइवर्जेंस भी मिलेगी, which would make this more perfect and more plausible. So right now I am very bullish since we are breaking out, and this count, the 1212 count, has become my favorite count, and that's why I wanted to go live. This is I'm going live for the first time, so I'm very nervous and I don't know how it's gonna turn out, but this was the urgent update. क्योंकि अगर ये 1212 है, if it's minor 12 into minute 12 into minuet 12, then this wave 2, this minuet wave 2 is the last and final chance to get in before the final impulse wave of this bull run. ये 3 wave move अगर आपने मिस कर दिया wave 2 का, then you'll be buying a lot higher. That's the point. So अगर ये सारे counts को मैं overlap करूं, this is the 1212 alternate. This was my primary correction. अच्छा हाँ, इसको हम थोड़ा वो कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया, it could still be a WXY. So this क्या हो गया, सब कंफ्यूजन क्यों हो गया अचानक. ओके, सो दिस कुड बी स्टिल, वी कुड बी स्टिल इन अ वेव बी, जो कि और ऊपर एंड होगी एंड देन वील कम डाउन, जो कि हमने डिस्कस की थी सबसे पहले बेरिश काउंट केस की, कि दिस वाज द फर्स्ट मूव डाउन, और इसकी पार्टनर लेग आएगी और जो हमारी लीडिंग डायगोनल है. सो दीज आर द 3 काउंट्स. एक सेकेंड, फिब्स मैं बंद कर दूं, इट्स गेटिंग वेरी, या नाउ इट लुक्स बेटर. ये भी फिब हटा दें हम. सो तीनों में से कोई भी काउंट सही हो, सूनर और लेटर हम नीचे आएंगे. इफ इट्स 1212 वील कम बैक फॉर minuet wave 2. If it's an ABC, a huge ABC, then we'll come back down for wave C. If it is a leading diagonal, we'll come back down again for minute wave 2. तो कुछ भी हो, very soon, right now we are moving up, but very soon we are gonna come down, and that pullback will be the last chance to get in. So this is the reason, this is the reason behind the urgency of making this live stream.
Okay, so I hope you guys get the idea. Or if you see on daily, you can see we are currently breaking out. और इतना बुलिश कैंडल मैं नहीं कहूंगा इसको. You see, I want to, not just break this, but also no, not just break the resistance, but also, break this high. It's very, we are very far away from the high actually. So it would be nice to, make a higher high first. So this would be the minor pivot. So 70,000 is the minor pivot, and then 73,777 according to the Binance spot chart. This is the major pivot. So this I want to go beyond this. This is a good first step. I hope we close the daily candle above this channel resistance. But the more bullish the candle closes, the better. You see, the type of candle I'm talking about is, you see this candle. Look at this candle. This candle. We had resistance. You see how bullishly we took out the highs of the candles, we took out the resistance, we closed there. Huge bullish engulfing candle, a $4,000 candle, started from 51,500, closed at 54,500. So $3,000 candle. I want a candle like this to close above this channel resistance. This is not bad, but it's not like super bullish, so I'm not sure right now. We still got around 6 hours to close, so let's see how it goes. Okay, so that's the update, and join the Discord. अगर आप short term update I'm very active in the Discord, and I keep updating there, and hopefully see you in the next one. And I don't know how to close this live. Just give me a second. I'm doing this for the first time. I really don't know how to get rid of this live streaming, and how to end it. How to end it? OBS, help me. Help me stop streaming. Okay, goodbye.